आगे बढ़ें और आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी का कहना है कि कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। इस मकसद के लिए जुडिशल अकेडमी में जुडिशल अफसरान को तरबियत दी गई। अदलिया के लिए पेशा वाराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। Ladies and gentlemen, I'm pleased to share that we have already begun translating this resolve for improving judicial well-being into concrete, short and medium-term policy actions through the National Judicial Policy Making Committee, a committee comprising of all the Chief Justices of the High Courts and the Chief Justice of Pakistan as its chairman, and a bench of the High Court which should be assigned to deal with these cases, and same is the case with the Supreme Court. This will bring in consistency in the decisions, and hopefully it will also shorten the period of deciding such cases. We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the High Courts, and inshallah we are meeting again on the 18th of August, where each High Court will give us an input of how they want to proceed with it.